Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va? Bonjour. Oui, je vais bien. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Ok. Je vais jouer les audios et après avoir écouté les audios, il faut donner les réponses aux questions. La vidéo va être posée pour 10 ou 20 secondes. Après cela, je vais jouer l'audio encore fois, la deuxième fois ou la troisième fois. Et nous allons discuter les réponses avec l'audio et avec la transcription. D'accord? I am going to play an audio once or twice. After the audio, it will be paused for 10 seconds or 20 seconds. Then you have to do the answers. Then I will play it again. Then we will discuss the answers and we will also discuss the audio with transcription, right? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, You are madame. ready? Ok, d'accord. Je vais jouer l'audio maintenant. Vous pouvez prendre un stylo dans vos mains. You can keep a pen in your hand. Deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Exercise 1, 4 points. You will hear a document twice. You will have a 30-second break between the two listenings, then 30 seconds to check your answers. Read the questions first. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. Ok. Est-ce que vous avez compris l'audio? Numéro 5. How many of you understood the audio? Vous pouvez lever vos mains. You can raise your hand. Those who understood. मतलब थोड़ी बहुत समझ आई हो. Kavamjeet, then Aziz. Ok. Maintenant, je vais expliquer l'audio à vous. D'accord? Nous allons écouter encore une fois. TGV numéro. Le train TGV numéro. Le train. TGV. What is the meaning of train? T-R-A-I-N. Le train. The train. The train. TGV. This is the name of the train. Numéro 6008. Le train TGV numéro. Numéro 6866 6866 à à destination de Paris. À destination de Paris. À destination de Paris from Paris. तो पहले उसने ट्रेन का नंबर बोला. Then she said destination de Paris from Paris. Partira à 15. Partira à 15 heures. Partira à 15 heures. What is the meaning of partira? Partir. Partir is a verb which means to leave. To leave. Partira. This is a future sentence. It means will leave. 66 à destination de Paris partira à 15h18. 15h18. 15 कितना होता है आपका 3 राइट 15. 15 मतलब 15 18 मतलब 18 18. 3:18 हाँ तो Yes. आपका 15 कितना हो गया 3 Quai numéro 5. के numéro 5 क्या मतलब होता है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नंबर 5 5. ओके maintenant je vais tourner les sous-titres. I am going to turn on the subtitles. Regardez. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. Est-ce que vous avez compris? Oui. अभी जिनको पहले नहीं समझ में आया था थोड़ा सा बेटर समझ में आया
Yes, ma'am. OK. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. The questions by checking the correct answer or by writing the requested information. Exercice 2. 7 points. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Exercise 2, 7 points. You will hear a document twice. You will have a 30-second break between the two listenings, then 30 seconds to check your answers. Read the questions first. Salut, c'est Jean. On va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30 ? Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Salut, c'est Jean. On va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30 ? Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Salut, c'est Jean. On va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30 ? Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Chercher avec Mireille vers 18h30 ? OK. Read the questions first. Sarthak, read. Jane propose. Jean propose. Jean propose d'aller au cinéma. D'aller chez Mireille. Mireille. Aller au restaurant. Ah, au restaurant, oui. What does it mean? Jean proposed to Cinéma. go to cinema. जी. D'aller chez Mireille. To go at Mireille's place. To go at the restaurant, right? Restaurant. हाँ जी. Another question, Abhijit, read. À quelle rue passe Jean? This one. Complétez son numéro de téléphone. Oh, मैं वो दूसरा पढ़े सेकंड वाला. Complete son número de teléfono. हाँ. Complete his phone number, right? Okay, third question. Manmeet, read. हाँ जी. Aki. Aki. Okay, anyone else? Aki pakle Jean. What is the meaning of Aki? To whom Jean is talking? To whom speaks Jean. मतलब Jean is speaking to whom, right? À une fille, à un garçon, je ne sais pas. मतलब to a girl, to a boy, या फिर we don't know. On ne Si tu ne sait pas peux pas, मतलब. appelle-moi we don't au 06 Okay, I'm going to play. 18h30. Si tu ne peux pas, appelle-moi.
Have you marked the answers? Anyone raise your hand who have marked the answers? Only Sandeep and Preet. और किसी ने नहीं किया? Okay, I'm playing once again. Salut, c'est Jean. On va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30? Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Now, अभी थोड़ा ज्यादा समझ में आया हो? Ok, maintenant nous allons discuter. Salut, c'est Jean. Salut, c'est Jean. C'est मतलब होता this is. Salut, c'est Jean. Right? On va au ciné ce soir pour voir. On va au ciné ce soir. Va. Va, which verb is this? Va. On va au ciné. Which verb is this? Avoir. Alors. No, not voir. Aller. Aller. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Right? तो उसने क्या बोला? On va au ciné. Au ciné means to the cinema. On va au ciné. On va au ciné ce soir. Voir Nemo. Pour voir Nemo. To see the Nemo. Nemo को देखने के लिए. Like Nemo is a film or something. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30? On passe te chercher vers Mireille à 18h30. On passe te chercher. मतलब we come to take you towards Mireille at this time. मतलब can I come to pick you up? Ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille. On passe te chercher. मतलब we come to search you, to take you. chercher मतलब ये नहीं कि ढूंढना. chercher मतलब to pick you. We come to pick you avec Mireille, with Mireille. Vers 18h30? Vers 18h30. Around 6:30. Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 Si tu ne peux pas, if you cannot, appelle-moi, call me at dash. 30 22 15 So what is the answer here? 15, right? 59. Est-ce que vous avez compris maintenant? Did you understand now? Okay, now I'm playing once again without subtitle. Salut, c'est Jean. On va au ciné ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30? Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Was it better now? Yes, ma'am. Salut, मैम c'est Jean. सेकंड वाला नहीं On va au समझ आ ciné रहा. ce soir pour voir Nemo. On passe te chercher avec Mireille vers 18h30? Si tu ne peux pas, appelle-moi au 06 30 22 15 59. Second वाला तो 15 है ना? 15. Yes, ma'am. मैम ये थर्ड हो गया ना सेकंड वाला. ਜਿਹੜਾ clock ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ओके Oh, Aquele 18h30. passo. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 18h30. ओके ओके ठीक है.
18h30 मतलब थोड़े मतलब मैं तेरे का व्यायाम 6:30 बजे ओके ओके ठीक है 18h30 क्लियर हो गया शिवाजी सबनों हो हाँ जी वी Yes, ma'am. ok maintenant je vais jouer un autre audio dans cet audio il y a dans la photo il y a combien de photos dans l'image il y a combien de photos dites-moi il y a combien d'images dans la photo how many images 5. 5 Thank. mais dans l'audio la personne va parler concernant 4 images image 1 image 2 image 3 image 4 la personne va aussi parler concernant l'image 0 mais l'image 0 n'existe pas il y a seulement 4 images que vous pouvez trouver dans la photo. Il y a 5 images dans la photo. Cependant, la personne va parler concernant les 4 images. Il faut trouver les 4 images. Par exemple, il faut trouver quelle est l'image 1, quelle est l'image B, quelle est l'image C et quelle est l'image D. Est-ce que vous avez compris? There were 5 photos in the picture, but the person will speak about how many photos? 4 4. 4. The person will also speak about the image number 0, but image 0 यहाँ पे है नहीं है. तो वो A, B, C, D. You have to find out which 4 images are discussed by the person, right? Now I am playing the audio. Écoutez s'il vous plaît, vous pouvez regarder l'image avec la concentration. Avec cela, je vais jouer l'audio. Ok, vous êtes prêts? On commence? Yes, Oui, ma'am. madame. Ok. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini? Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens, on rentre. 1 minute ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini? Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens, on rentre. 1 minute ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Toi, j'ai joué encore fois. Situation 0. Should I play once more?
जी madame. Ok. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini? Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens, on rentre. 1 minute ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Ok, quelles sont les réponses? Quelle est l'image numéro 1? L'image numéro 1. What is the picture number 1? Image D. D? Image D. D? Ok. La La force du image musicien. numéro 2. Second वाली कौन सी थी? Image B. Third वाली? Image A. And fourth वाली? Image A. Ok. Est-ce que tous les étudiants ont noté les mêmes réponses? Ou il y a quelques différences? सभी ने यही वाला आंसर लगाया है? Ok. Yes, ma'am. Nous allons discuter. Situation 0. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. C'est une bonne idée. What does it mean? C'est une bonne idée. It's a good idea. It is a good idea. The venir. What is the meaning of venir? Venir. Which verb is this? Venir. V-E-N-I-R. To come. To come. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. Dans ce parc. In this park. Right? Dans. D-A-N-S. In the park. À bicyclette. At bicycle. In the bicycle, yeah. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. What is the meaning of tranquille? Silent or Yes, c'est silent. Il n'y a pas beaucoup de Yeah. monde. There are not there are So not many many people people. over there. lots of people. Il n'y a pas beaucoup de monde. So, quelle est l'image? Est-ce que vous pouvez trouver l'image concernant l'audio? No. Non. Parce que dans sa photo, un enfant est sur la bicyclette. Cependant, ce n'est pas un parc. It is not a park, right? Oui. Et la deuxième chose est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes. Mais dans l'audio, la personne dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
And the second thing is there were also lots of people, but in audio we can hear that there were not lots of people. So it is not the right answer. So जीवो का कोई भी नहीं है image. Okay, let's listen again. Another one. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui. Est-ce qu'il dessine bien? Dessine. What is the meaning of dessine? Dessiner. To draw. To draw. Est-ce qu'il dessine bien? Does he draw good? Does he draw good? C'est un joli portrait. What does he say? C'est un joli portrait. Portrait. C'est un joli portrait. Portrait मतलब portrait. Jolly मतलब beautiful. It is a beautiful portrait. Joli. See? C'est un joli portrait. Portrait मतलब portrait. On va le mettre dans notre chambre. On va le mettre dans notre chambre. On va le mettre dans notre chambre. Mettre. What does it mean? Mettre. To put. To put, right? Dans notre chambre. In our room. Yes, in our room. On va, we are going to put it in our room. Il a bientôt fini? What does it mean? Il a bientôt fini. He is about to finish. No. A bientôt fini. ये हमने sentence structure अभी नहीं किया है. It is a passé composé. Past tense. He has finished. He has soon finished. Encore un peu de patience, ma chérie. Encore un peu de patience, ma chérie. Encore का मतलब होता है still. Un peu de patience, ma chérie. Little bit patience, my dear. Yeah. Un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Situation 2. Now listen to the situation number 2. Allez maman, viens, on rentre. Allez maman, viens. What the child says. Allez, go, mama. Just give me one. Okay. Encore un peu de patience, ma chérie. Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens, on rentre. But the child says. He's asking his mom to come somewhere. What does he say in French? Hello, mama. Anyone else? Try cover. I'm playing once more. Patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens. Do you... हाँ जी? जिन्होंने क्लासेस लगाई हुई हैं, do you know the conjugation of verb aller? Do you know the conjugation of verb aller? Oui. तो वो के साथ क्या होता है? Allez. Vous allez, right? Vous तो वो बोल रहे हैं allez maman, on vient. Viens, on rentre. 1 minute.
Allez, maman, viens, on rentre. Viens, what does it mean viens? Venir verb की conjugation याद है? venir Come. venir To मतलब to come. come. Je To viens, come. tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Right? तो वो बोल रहा है allez maman, viens, on rentre. Rentre, rentre verb की conjugation है je rentre, tu rentres, il, elle, on rentre, nous rentrons, vous rentrez, il, elle rentre. तो वो बोलते हैं on rentre कि let's return. Come mama, let's go. मतलब वो बोल रहे हैं let's go back. Let's return home, right? Patience, Yeah. ma chérie. Situation 2. Allez, maman, viens, on rentre. 1 minute, ma petite chérie. 1 minute, ma petite chérie. 1 minute, ma petite chérie. 1 minute, my dear. Je prends une photo. Je prends une photo. Je prends une photo. To prends, I'm which taking verb a is photo. this? To take. Prendre. I'm taking a take. photo. Yeah. Take, right? Does everybody knows the infinitive verb of prend? Just raise your hand. Who doesn't know? The infinitive verb of prend. जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा करो. सबको पता है? Infinitive verb of verb prend. Okay, only one, only two. नेहा को नहीं पता कि इंफिनिटिव वर्ब क्या है. ओके सुखविंदर, ठीक है. बाकी सबको पता है ना खों का इंफिनिटिव वर्ब क्या है. Okay, so how to find out? For example, you are doing this listening at home. You don't know what is the meaning of खों. ठीक है. So how will you do? You go to the word reference. जिनको नहीं पता, go to word reference. Word reference is an application. I told you yesterday also, right? Go to word reference. जिनकी ये फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, ठीक है, उनको नहीं समझ में आएगा आज. बहुत कम आएगा, अगर आएगा भी तो. सो दैट इज नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लगाई है ना. सो ऑब्वियसली तो उनको नहीं पता कि हमने काई क्लास, मतलब हमने अबाउट 30 आवर्स की क्लास लगा चुके हैं. सो वी हैव कवर्ड मैनी थिंग्स. तो या तो जो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डल रही है वहां से देखना स्टार्ट कर दो. ठीक है. बट जब तक आप ये चीजें कवर नहीं करोगे, सो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. खों, खों, खों मतलब टू टेक, राइट. तो इसका इंफिनिटिव वर्ब क्या आ गया? prendre. दिस इज वी साइन होता है वर्ब के लिए. नाउ गो टू द conjugation. यहाँ पे आप prendre लिख लो, क्योंकि इंफिनिटिव वर्ब prendre थी ना. je prends, tu prends, il elle prend, ठीक है. तो उसने बोला था खों. Je prends une photo. I take one photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais Il joue vraiment bien ces musiciens. Il joue vraiment bien ces musiciens. He plays really well, these musicians. je n'aime pas beaucoup la musique classique. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Name, aimer means to like. हमने कल भी किया था ना, adorer, aimer. Oui. I don't like lots of classic music. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Voilà. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Voilà, c'est à vous. It is your turn to play. C'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Oh là là, ça ne va pas
Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Va मतलब क्या होता है? Va. Va means Going to yeah. go. तो ये कौन सा सेंटेंस है? It is not going to be easy. Yeah. Which sentence structure is this? कौन सा टेंस है ये? Negative. नेगेटिव तो है लाइक प्रेजेंट है. Present, ma'am. No. It is future force. हमने ये भी नहीं किया है ना? Okay, okay. We have not done it yet. It is future force. हमने टेंसेस अभी कोई भी नहीं किए. हमने बस जस्ट थोड़े से प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनकी वर्ब्स की है, जैसे आले, एमे, बनी, ठीक है, या थोड़ी थोड़ी वर्ब्स की हैं अभी हमने. Ça ne va pas être facile. Ok, maintenant je vais jouer l'audio encore fois sans les sous-titres et il faut trouver les réponses et vous pouvez analyser si vous êtes capable de trouver les réponses cette fois ou non. Now I am going to play the audio without subtitles. Now you can see how much you can understand as compared to the first audio, and now how much is the difference. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini? Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens, on rentre. 1 minute ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Allez maman, viens, on rentre. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui, c'est un joli portrait. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. En plus, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Situation 1. Est-ce qu'il dessine bien? Oui, c'est un joli portrait. On va le mettre dans notre chambre. Il a bientôt fini? Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez maman, viens, on rentre. 1 minute ma petite chérie, je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Situation 0. C'est une bonne idée de venir dans ce parc à bicyclette. हाँ जी. Est-ce qu'il y avait une différence? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mieux qu'avant? Oui, ma'am. There was difference, and were you able to understand better than before? Oui, madame.
Oui, madame. C'est l'astuce d'améliorer votre compréhension orale. Par exemple, si vous écoutez les audios, les podcasts chez vous, sur la chaîne YouTube où vous utilisez les livres, par exemple, Edito, n'importe quel livre vous utilisez, n'importe quel audio vous écoutez, vous pouvez aussi écouter les audios sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'audios pour les débutants aussi, pour les personnes débutantes. Et si vous écoutez les audios, c'est possible que vous n'êtes pas capable de comprendre la première fois ou la deuxième fois. Mais ne démotivez pas. Il faut écouter la même vidéo encore fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Vous pouvez tourner les sous-titres, ok? Et vous pouvez aussi tourner les sous-titres en anglais, en français, en anglais, en français. Vous pouvez chercher les mots, le vocabulaire qui est nouveau pour vous sur le Word Reference, sur le DeepL. Il y a beaucoup de plateformes qui vous aident à préparer cette langue. Et après avoir écouté l'audio troisième fois ou quatrième fois, vous pouvez analyser un bon changement en vous-même. Vous pouvez voir que votre production orale, votre compréhension orale a été améliorée. Est-ce que c'est clair? So I told you that this is a strategy to improve your listening, to improve your speaking. So no matter what your level is, for example, you are at A1, A2, so you can search the videos or audios at YouTube or any books. There are many books also which keep the audios. So you can listen to the audio. First time you will not be able to understand. Second time you are not able to understand. Third time आपको कुछ पता चलेगा. आप कुछ वर्ड सर्च कर लोगे, है ना? कि अच्छा मुझे फोटो सुनाई दिया, मुझे आले सुनाई दिया, द वर्ड्स विच यू नो, तो आप उन वर्ड्स को पिक कर लोगे. बट आपको अच्छे से अभी भी समझ में नहीं आया. लाइक स्टिल यू आर एट 20% और 30%. जब फर्स्ट टाइम आप सुनोगे देन टर्न ऑन द सबटाइटल. चाहे आप इंग्लिश में ही टर्न ऑन कर लो, फिर आप देखो कि अच्छा इसका क्या मतलब है. देन अगेन टर्न ऑन द सबटाइटल इन फ्रेंच. फिर आप फ्रेंच में देखो कि क्या था, कौन कौन से वर्ड आपने मिस किए, इसका क्या मतलब है, वाह का क्या मतलब है, आले का क्या मतलब है, म्यूजिक का क्या मतलब है, ल का क्या मतलब है. सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑडियो. देन लिसन टू इट वंस अगेन विदाउट सबटाइटल. देन यू कैन सी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. पहले आपको 10% समझ में आया था एंड फोर्थ और फिफ्थ टाइम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट 90%. तो जब आपको इतना समझ में आया वैसे यू कैन स्पीक. आप सबटाइटल ऑन करो, वीडियो के साथ साथ में बोलो. जब आप वीडियो के साथ साथ में बोलते हो ना, देन इट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग ऑल्सो. आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग भी, आपकी लिसनिंग भी. सो दिस इज अ प्रैक्टिस विच यू कैन डू एवरी डे टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग. डिड यू गेट इट? Oui, oui, madame. Oui, madame. Cyclette. Être dans notre chambre. Il a bientôt fini? Encore un peu de patience, ma chérie. Situation 2. Allez, maman, viens, on rentre. 1 minute, ma petite chérie. Je prends une photo. Situation 3. Ils jouent vraiment bien, ces musiciens. Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique. Situation 4. Voilà, c'est à vous de jouer. Oh là là, ça ne va pas être facile. अभी भी जिसको समझ में नहीं आया जस्ट रेज योर हैंड. हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल नए हो तो उनको शायद नहीं आएगा समझ, है ना? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द वर्ब्स, हाउ डू वी कॉन्जुगेट, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, प्रीपोजिशंस कैसे यूज करते हैं, दे डोंट नो. ओके, ओनली वन हैंड इज रेज्ड. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Answer the questions by checking the correct answer or by writing the requested information.
Exercice 4, 6 points. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Exercise 4, 6 points. You will hear a document twice. You will have a 30-second break between the two listenings, then 30 seconds to check your answers. Read the questions first. 0. Excusez-moi, mais j'entends mal. Vous pouvez répéter? Allô? Rue de l'Église? Au 6? Merci. Situation 1. J'ai réservé pour 2 nuits. Je m'appelle Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. La voici. Chambre 48, 3e étage. Elle donne sur le jardin. Vous y serez très bien. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille, le 1er juillet vers 8 heures du matin. Vous voyagez en quelle classe? Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction? Oui, 50%. J'ai la carte jeune. Situation 3. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors, un plat du jour, s'il vous plaît. Situation 0. Excusez-moi, mais j'entends mal. Vous pouvez répéter? Allô? Rue de l'Église? Au 6? Merci. Situation 1. J'ai réservé pour 2 nuits. Je m'appelle Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. La voici. Chambre 48, 3e étage. Elle donne sur le jardin. Vous y serez très bien. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille, le 1er juillet vers 8 heures du matin. Vous voyagez en quelle classe? Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction? Oui, 50%. J'ai la carte jeune. Situation 3. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors, un plat du jour, s'il vous plaît. Situation 0. Excusez-moi, mais j'entends mal. Vous pouvez... Qu'est-ce que je vous sers? Vous bénéficiez... Bonjour madame. Nuit. Situation 0. Excusez-moi, mais j'entends mal. Vous pouvez répéter? Allô? Rue de l'Église? Au 6? Merci. Situation 1. J'ai réservé pour 2 nuits. Je m'appelle Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. La voici. Chambre 48, 3e étage. Elle donne sur le jardin. Vous y serez très bien. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille, le 1er juillet vers 8 heures du matin. Vous voyagez en quelle classe? Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction? Oui, 50%. J'ai la carte jeune. Situation 3. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors, un plat du jour, s'il vous plaît. Anji, what is the answer first? Hotel. Second, Hotel. Anji? Anji, second ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ? ਯੂਨਦਤ ਥਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? Down restaurant. ਦੋਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ? 1. J'ai réservé. Situation 0. Excusez-moi, mais j'entends mal. Excusez-moi, mais j'entends mal.
Je tombe mal. Attendre is a verb which means to hear. Here. Excusez-moi, je tombe mal. I hear you bad. मतलब I can't hear you properly. Je tombe mal. Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter? Pouvez means? Can. What is the infinitive verb? Pouvoir. Pouvoir. P-O-U-V-O-I-R. Pouvoir. Pouvez. Pouvoir मतलब होता है can. इसकी conjugation है je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent. Like this. Allô? Rue de l'Église? Pouvez means can, power, ability, right? Can. We means verb. तो इसकी infinitive verb क्या है? Pouvoir. Then go to conjugation. Put pouvoir here. Pouvoir, देखो, je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous le pouvez, il, elle peuvent. I can, you can, he can, one can, we can, you can, they can. Vous pouvez répéter? You can repeat. Vous pouvez répéter? Allô? Rue de l'Église? Aussi? Who the église? L'église मतलब होता है church. Church. मतलब church street. Merci. Merci. तो जीरो नंबर सिचुएशन तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना? हमने 1 से स्टार्ट करना है. Situation 1. J'ai réservé pour 2 nuits. Je m'appelle. ये réservé pour 2 nuits. What is the meaning of réservé? Réservé. Reserve. To reserve. Reservation. To To reserve. for. ये reserve. This is a passé composé. Nous allons, nous n'avons pas encore fait le passé composé. This is the past tense. I have reserved for 2 nights. Je m'appelle Monsieur Legrand. Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. Je voudrais la clé, s'il La vous plaît. I would like the To key. have Key. key. Please. Please. Clé मतलब होता है key. The key. voudrais मतलब होता है would like. Would like. Voici. Chambre 48, troisième étage. Voici. Chambre 48, troisième étage. What is the meaning of troisième étage? Room number 48, third state. Third Third floor. third floor. Elle donne sur le jardin. Elle donne sur le jardin. Sur le jardin का मतलब होता है it faces towards the garden. दोने का मतलब ये नहीं है कि it gives on the garden. It faces upon the garden. मतलब जो कमरा है आपका it faces towards the garden. तो आपको garden का व्यू मिलेगा. Vous y serez très bien. Vous y serez très bien. You will be there very well. मतलब आप enjoy करोगे. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille. Qu'est-ce que c'est aller simple? Aller simple. Aller simple, aller retour. Aller simple का मतलब होता है one side. जैसे हम बोलते हैं ना कि we want one side ticket, we want आने जाने की टिकट चाहिए, सिर्फ जाने जाने की चाहिए. जाने जाने की मतलब aller simple. Bonjour madame, un aller simple pour Marseille. Le 1er juillet vers 8 Le 1er juillet heures du vers matin. 8 heures du matin. Vous voyagez en quelle classe? Vous voyagez en quelle classe? secondes. Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction? Vous bénéficiez d'une Oui, réduction? 50%. 50%. J'ai la carte jeune. J'ai la carte jeune. वो बोलती है कि ओके ठीक है आपके पास कोई रिडक्शन है डिस्काउंट है रिडक्शन मतलब होता है डिस्काउंट वो कहता है यस 50% बिकॉज आई हैव द यंग कार्ड कार्ड जन मतलब कोई कार्ड होता है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है
Vous voyagez. Un aller simple pour Marseille le 1er I want aller simple, one side ticket for Marseille, le juillet vers 1er 8 heures juillet, the 1st July, vers मतलब होता है towards 8 du matin. of the morning. Vous voyagez en quelle classe? Vous voyagez en quelle classe? You travel in which class? Vous voyagez en quelle classe? Voyager is a verb which means to travel. Je voyage, tu voyages, il, elle, on voyage, nous voyagions, vous voyagiez. Vous voyagez, il, elle voyage. Vous voyagez. You travel in which class? Seconde. Vous bénéficiez Seconde. मतलब second class में मुझे travel करना है. d'une réduction. Vous bénéficiez d'une réduction? You get the benefit of a reduction? Oui, 50%. Oui, 50%. J'ai la carte jeune. J'ai la carte jeune. Carte means card. I have the jeune card. Jeune card. Est-ce que c'est clair pour vous? Quelle est la réponse de situation numéro 2? Le billet, date, prix ou carte? Un billet. What the person is demanding? A The billet. ticket. Un Ticket. billet. Ok? Il voudrait avoir le billet pour Marseille. Un aller simple pour aller à Marseille. Et la femme lui demande si la personne a la rédaction. Et la personne a dit que oui, j'ai une rédaction parce que j'ai la carte jeune. वो फीमेल उससे पूछती है कि do you have any discount? तो वो बोलता है yes, I have 50% discount, I have the young card. Ok, je vais jouer l'autre audio, la situation numéro 3. Situation 3. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous sert? Qu'est-ce que c'est sert? Est-ce que vous pouvez me donner le verbe infinitif de sert? C'est la conjugation de quel verbe? Sert. किस verbe की conjugation है? Search it on word reference. जल्दी जल्दी सर्च करो. Sert. Être. Sorry? Is it sahbua? No. Sert. S-E-R-S. Search it in word reference and tell me what is the infinitive verb. Serve the ma'am. मैंने समझ नहीं आया तो सीधे बाबा बोलूंगी. Serve. Servir. So yeah, S-E-R-V exactly. Servir. S-E-R-V-I-R. Ok, ma'am. Est-ce que tout le monde est capable de chercher le verbe infinitif? Si vous n'êtes pas capable de chercher le verbe infinitif, vous pouvez lever vos mots. If you're not able to search the infinitive verb, you can raise your hand. कि मैम हमें पता नहीं चला कि what is the infinitive verb. Dans ce cas-là, je vais chercher pour vous. सबको पता चल गया कि servir है? Yeah, sahbia. Yeah. Got it, ma'am. होंगे दो चार स्टूडेंट जिनको नहीं पता चला. मैम नहीं थोड़ा जा दोबारा दसोगे? सैक वर्ब दी इंफिनिटिव वर्ब मैंने पूछा ना भी केड़ी है तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਗੋ ਟੂ ਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁੱਟ ਸੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਟ ਸੈਕ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਕੀ ਆ ਗਈ quel est le verbe हाँ जी what is the verb sec servir servir okay quel est le son de servir servir मतलब to serve okay ठीक है मैम Ok. Après cela, vous pouvez aussi voir la conjugation de ce verbe. Comment vous pouvez voir la conjugation? Quelle est la méthode de voir la conjugation? What is the method to see the conjugation? How to see the conjugation? Tell me. By clicking on the conjugation. Ok, cliquez sur la conjugation. Vous pouvez mettre le verbe encore fois. You can put the verb again. Si, c'est la conjugation. Je sers, tu sers, il, elle, on sert, nous servons. Okay. Vous servez, il, elle serve. I serve, you serve. He serve, she serve, one serves, we serve, you serve, they serve. तो वो बोलती है what the speaker is saying. Qu'est-ce que je vous sers? What I can do for you, right? What I can serve you, what I can do for you.
तो qu'est-ce que je vous sers? Je, I, vous मतलब you, serve मतलब serve. What I can serve you, what I can do for you. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? C'est quoi le plat du jour s'il vous plaît? What is the plat du jour? Plat du jour मतलब होता है dish of the day. Plat C'est du quoi? jour. Plat du jour, dish of the day. Dish of the day. For example, we go to any restaurant, we ask you, so what is your dish of the day? What is your special dish? आज की आपकी स्पेशल डिश क्या है? जूर द प्ला द जूर. Okay, ma'am. Got C'est it. quoi le plat du jour, s'il vous plaît? Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors, un plat du jour. पोआव का मतलब होता है लाइक वो क्या बोलते हैं पोआव दम मिर्चों को बोलते हैं शायद पोआव. कैप्सिकम. मैंने स्पेलिंग गलत डाल देंगे कैप्सिकम की. Poivron, right? So capsicum is called poivron. S'il vous plaît. Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors, un plat du jour, s'il vous plaît. Poivre. Okay, let's see. बाद में देखते हैं कि क्या बोला. The broccoli. Broccoli मतलब broccoli. Parfait. Alors un plat du jour s'il vous plaît. वो कहती कि ठीक है. I would like to have the dish of the day. So what is the response? इसका obviously third वाले का वो restaurant में है. First वाले का कहाँ पे है? Hotel. And second one का अब BA. S'il vous plaît. Situation 0. Excusez-moi, mais j'entends mal. Vous pouvez répéter? Allô? Rue de l'Église? Au 6? Merci. Situation 1. J'ai réservé pour 2 nuits. Je m'appelle Monsieur Legrand. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. La voici. Chambre 48, 3e étage. Elle donne sur le jardin. Vous y serez très bien. Situation 2. Bonjour madame. Un aller simple pour Marseille, le 1er juillet vers 8 h du matin. Vous voyagez en quelle classe? Seconde. Vous bénéficiez d'une réduction? Oui, 50%. J'ai la carte jeune. Situation 3. Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? Steak au poivre, purée de brocoli. Parfait. Alors, un plat du jour, s'il vous plaît. Ok, maintenant c'est clair? Oui, madame. Est-ce que c'était clair que vous pouvez trouver la différence? Par exemple, première fois, c'est possible que vous trouvez cet audio un peu vite. Mais maintenant, c'est un peu long pour vous, n'est-ce pas? जैसे आपने फर्स्ट टाइम सुनी तो आपको बहुत फास्ट लगी होगी कि कुछ समझ में नहीं आया. जैसे अभी सुन रहे हैं, so it seems slower to you. ऐसा होता है कि नहीं? Oui, madam. Yes, it's true, ma'am. Because जब Yeah, फर्स्ट we टाइम under- सुनते हैं, we miss many words. Yeah. It seems very fast कि पता नहीं क्या बोल दिया. जब बार-बार सुनते हैं, तो लास्ट में ये लगता है कि नहीं ठीक है, very manageable, समझ में आ रहा है. Because earlier we were not able to find out the words. So vocabulary plays an important role. जब तक आपको vocabulary नहीं आएगी, आप बहुत चीजें you will not be able to listen, like you will not be able to understand. Whether it is reading, whether it is listening. जो भी आपको बोलते हैं कि without vocabulary you can do, it is not possible. Vocabulary is the bone of any language. अगर आपको पता है क्योंकि voyager means to travel, BA means to ticket, reserve मतलब to reserve, then only you will be able to comprehend. तभी आपका जो mind है वो comprehend करेगा कि okay he says this.
क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट यू लिसन इन फ्रेंच, तो आपका माइंड धीरे धीरे वो ना पंजाबी में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है, तो वो टाइम जो लैप्स है ना उतने में वो अगली लाइन बोल देता है, उतने में स्पीकर अगली लाइन बोल देता है, आपने पहली लाइन को ही ट्रांसलेशन नहीं किया होता अभी, है ना। जब आप सेकंड लाइन पे पहुंचते हो वो फोर्थ लाइन पे पहुंच जाता है, सो यू थिंक लाइक इट इज वेरी फास्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट आपके माइंड को वो लैंग्वेज को प्रोसेस करना है, योर माइंड विल प्रोसेस दैट लैंग्वेज। तो वो होएगा कैसे, अगर आप बार बार किसी चीज को सुनोगे, ताकि आपके माइंड को पता चल जाए कि ओके ही इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, उसको ये बोलते हैं, ये चीज ऐसे है, सो इट विल ग्रैब इट एज योर मदर टंग ओनली। तो उसको टाइम लगेगा, यू विल हैव टू हार्ड वर्क, डेडिकेशन, यू हैव टू लिसन द ऑडियोज एवरी डे एटलीस्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, whenever you travel, you go to office, you come back, that time you can do the listening, but that time you will be able to do the passive listening, not the active one, right? But when you will be free, then you can do the active listening. तो आप पैसिव लिसनिंग भी करो, एक्टिव लिसनिंग भी करो, सर्च आउट द वोकैबुलरी, नोट डाउन दोज वोकैबुलरी इन एक्सेल शीट, देन व्हेन यू लिसन द अगेन अनदर ऑडियो हैविंग द सेम वर्ड्स, तो आपके माइंड बोलेगा कि अच्छा तूने ये वर्ड्स पहले किए हुए हैं, है ना। तो आप अगेन मतलब जल्दी जल्दी से उसको ट्रांसलेशन कर लोगे कि ओके म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन, डेसा मतलब डिजाइन, मादमोजेल, these words are familiar to me, but to become familiar you have to give time to this language. Okay ji, samedi bon apprentissage à vous. Ma'am, anything for next week? नेक्स्ट वीक के लिए ना मैंने आपको एक फाइल भेजी हुई है, ठीक है। Speaking वास्ते मैम? हाँ जी, Okay, okay, ठीक है। go through that file, Okay, try to make your own answers, then we will discuss in the class. okay, okay, ठीक है मैम, ठीक है। Okay, Okay, thank you मैम। बाकी जो मैंने बुक्स शेयर की हुई हैं, you can do all the exercises from those books for the topics which we have covered till now. आपने अभी तक बहुत से बच्चों ने वही टॉपिक्स नहीं किए हैं, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। सो आई गिव like lots of homework, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो पूरा का पूरा होमवर्क किया है, जैसे मैंने बताया कोई एक आधा ही होगा। Okay मैम। So you have to be Hello? particular and do, हाँ जी। This is my first class. I don't have any materials or any book. ਓਕੇ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? नहीं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है। So, ओके ओके, मतलब आपको कुछ समझ में आया आज, मतलब थोड़ा बहुत या कितना समझ में आया? थोड़ा बहुत आया समझ में। ठीक है, ठीक है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ WhatsApp ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ। हाँ जी मैम, मैं कर दी ग्रुप में। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Okay. डन। ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ दैट बुक, in that group, sorry. Okay. Okay ਜੀ, Asamedi. Asamiti. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bon apprentissage. Thank you. Bye. Au revoir.